आई एम ऑडिबल। ओके। राम राम भाई सबको। कैसे आप? बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है अपन अपन भी एक हार्ड चैलेंज सीरीज चलाई है। इसका आज 5वां दिन है। ठीक है। मैं ये सीरीज चलेगी आज 11 बजे तक। अभी हो रही है 9:40 11 बजे तक लाइव रहूँगा आप ही। ठीक है। मैं पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ना है। आज मेरा टारगेट रहेगा परफेक्ट रिवीजन बुक से। टारगेट है मेरा। पहला टारगेट लॉस का है। आईपीए एक्ट मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा करूंगा परफेक्ट रिवीजन से। फिर इकोनॉमिक्स में का फुल इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर, पाँचों का फुल रिवीजन आज होएगा। मैथ्स में एलआर का रिवीजन करूंगा। और अकाउंट में करूंगा कंपनी अकाउंट का रिवीजन। है तो थोड़ा हार्ड चैलेंज ये भी। फिर पूरा करेंगे। तो फिर देर किस बात की है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये रहे मेरे टारगेट। आज सारे टारगेट लिखे हुए हैं। हार्ड चैलेंज है। करते हैं पूरा। अपने अपने हथियार ले लो। हथियार मतलब बुक्स वगैरह ले लो अपनी। ये अपनी बुक्स से पढ़ते हैं। अब कैमरा में कर देता हूँ नीचे बुक की तरफ। ठीक है। जैसे जैसे टारगेट पूरा तो हो जाएगा टिक मार्क करते रहेंगे। चलो। चलो भाई चलो। सबसे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उठाएंगे लोगों का। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो अपने गाइस, ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। चलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 148 पे। मिल गया भाई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिल गया। ये रहा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बस मेटेरियल बहुत था, चिंता की बात नहीं। मेटेरियल का था। चलो स्टार्ट करते बिना कुछ देरी के। ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलो भाई। सबसे पहले पार्टनरशिप relation between partners plus agree to share profit plus carry on by all or any one of them acting for all। ठीक है। फीचर्स क्या है इसके? एग्रीमेंट है, बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, जॉइंट ओनरशिप होनी चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए और नो सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। ठीक है। एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ए पार्टनरशिप इज फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है। बिजनेस पर्पज होता है पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, partners agree to share the profits generated from the partnership business। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, each partner act as an agent for the partnership and other partners। ठीक है। जॉइंट ओनरशिप होती है, पार्टनर्स कलेक्टिवली ओन एंड कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द पार्टनरशिप। ठीक। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द पार्टनरशिप्स डेट्स एंड obligations। Relationship of trust, partners must act in good faith and disclose relevant information। ठीक है। फिर आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर्स पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर कंसिडर्ड एज वन। पार्टनरशिप डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। फिर आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसका एक मैंने बना रखा है एक्रोनियम मैप, मतलब म्यूचुअल एजेंसी, एग्रीमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है। इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। ठीक है। ईच पार्टनर डूइंग बिजनेस इज एन एजेंट प्लस प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर। ठीक। He is an agent and binds other partners by his acts। ठीक। He is a principal and bound by the actions of other partners। ठीक। It is the conclusive evidence of a partnership। Okay। Sharing of profit, mere sharing of profit is not the true test of partnership। ठीक। It is the prima facie evidence of partnership। There may be cases where a person receives a share of profit, but this does not make him a partner. First, by a lender of money to a person engaged or about to engage in any business। ठीक है। By a servant or agent as remuneration, by a widow or child of a deceased partner as annuity, or by a previous owner or part owner of the business as consideration for the sale of the goodwill or share thereof, does not of itself make the receiver a partner with the persons carrying on the business। एक केस है शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशरन मुर्जमुल। सुप्रीम कोर्ट का क्या है?
factor concluding that there is no partnership between the parties. First, parties have not written any record of terms and conditions of partnership. Second, no accounts maintained by firm of its own, which would be open to inspection by both parties. Third, no account of the partnership was opened with any bank. No written intimation was conveyed to the deputy director of procurement. ठीक है. फिर आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. फर्स्ट, वॉलेंट्री होता है, फ्री कंसेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉलेंट्री, फ्री कंसेंट होना चाहिए. कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, एक्सप्रेस हो सकता है जो ओरल या रिटर्न में हो. इम्प्लाइड जो कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हो उसे. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, अदरवाइज इलीगल एसोसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013. अगला काइंड ऑफ पार्टनरशिप विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन. ड्यूरेशन के रिगार्ड से पार्टनरशिप एट विल और फिक्स पीरियड पार्टनरशिप होती है. सेकंड, विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस. बिजनेस को एक्सटेंड के रूप में होती है. पर्टिकुलर पर्पस पार्टनरशिप और जनरल पर्पस पार्टनरशिप. ठीक है. फिर आता है पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल में सीधा सा बात है, नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप. अगला, एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स. ठीक है. पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड क्या होती है? सच such partnership comes to end after the expiry of fixed period if continued after the expiry of fixed period to be treated as partnership at will. ठीक है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, द पार्टनरशिप एग्जिस्ट्स फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस एडवेंचर. ठीक है. द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू दैट टास्क ओनली. अगला आता है जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अफेयर्स और पार्टनरशिप फॉर बिजनेस इन जनरल. ठीक है. पार्टनरशिप डीड होती है ऑलवेज इन रिटर्न फॉर्म. एन ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट ए पार्टनरशिप डीड. ठीक है. कंटेन्स वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एज रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स टू ईच अदर. द पार्टनरशिप comprises of immovable property, writing stamped and registered under Registration Act. No immovable property, writing and stamped according to the provision of Stamp Act 1899. कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से होते हैं? नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, capital contribution of each partner, profit sharing ratio of each partner, admission retirement of partner, provision of rate of interest on capital drawing or loan. ठीक है. Provide provision for settlement of account in case of dissolution of firm, provision for salaries or commission payable to the partners. ठीक है. Provision for the expulsion of a partner in case of breach of duty or fraud. ठीक है. अगले बात है टाइप ऑफ पार्टनर. एक्टिव और ओस्टेंसिबल पार्टनर क्या होता है? बिकम पार्टनर बाय एग्रीमेंट. ठीक है. एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस ऑपरेशन. ठीक है. ऑन रिटायरमेंट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस टू अवॉइड फ्यूचर लाइबिलिटीज. ठीक है. स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर become partner by agreement, does not actively participate in business operation, share profits and losses, public notice not required on retirement. Nominal partner provided his oblique her name to the firm. ठीक है. No real interest in the firm. ठीक है. Does not share profit and losses plus does not participate in business operation. ठीक है. Liable to third parties for all acts of the firm. ठीक है. Partners in profit only. Share profit but does not bear loss. ठीक है. Liable to third party for all acts of the firm. ठीक है. अगला आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, आल्सो कॉल्ड पार्टनर बाय ईस्टॉपर. ए थर्ड पार्टी misunderstood a particular person as a partner. Such partner is not entitled to share profits and losses of the firm and liable to third parties to whom such representation has been made. इनकमिंग पार्टनर क्या होता है? न्यू पार्टनर एडेड टू द फर्म. आउटगोइंग पार्टनर ए पार्टनर हु लीव्स द फर्म और टेक्स रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म. Remains liable to third parties for all acts until the public notice of retirement is given. Pub- Public publish of notice in a government recognized newspaper and at least in one vernacular newspaper or an official gazette. सब पार्टनर होता है when a partner agrees to share profit with a third person. That third person is a sub partner. Sub partner is not liable towards a third party. Yeah. अगला आता है
Rights of a partner: right to take part in the conduct and management of the business. Every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided. Right to be consulted. ठीक है? Right to free access of all reports, books, and accounts of the business and to inspect and take out copy thereof. The right must, however, be accessed bona fide. In the event of death of a partner, his legal representative, legal hire, authorized agent shall have right of access and inspect and copy book of accounts. Right to get interest on advance at the rate agreed at the rate 6% per annum. Right to share profit equally unless specified ratio agreed upon. Right to get compensated by the firm for all expenses incurred in the course of business. Payment made by him in respect of partnership debts and expenses incurred in doing such act in an emergency for the purposes of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence under similar circumstances. Right in partnership property and applied exclusively for the partnership. Power to act in an emergency for protecting the firm from loss. Right to stop the admission of the new partner without his consent. Right to retire by giving notice. Right to continue in the partnership, not to expel from it. Every outgoing partner has the right to carry on competitive business under certain conditions. अगली बात होती है duties of partner. Bound to carry on the business of the firm to the greatest common advances. ठीक है. Bound to maintain true and fair accounts of the partnership firm. Bound to be just and faithful to other partners. The firm can claim any unauthorized profit earned by the partner. Partner must not make secret profits. Where a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm, or from the use of the property or business connection of the firm, or firm name, he must account for that profit and pay it to the firm. Every partner is bound to act within the scope of his actual authority. Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to by his willful neglect in the conduct of business of the firm. ओके, थोड़ा वाटर ब्रेक हो गया है, पानी पी लेते थोड़ा। पानी पीना ही भाई जरूरी है। मैं भाई लोग कोई चाय कॉफी नहीं पीता रात को, जागने के लिए अपना पानी बस सही है अपने लिए। तो चलो अगले पे आते हैं। अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर। वेयर द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए पर्सन इट डज नॉट बिकम ए प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, merely because it is used for the business for the partnership unless transferred through agreement. The property which is deemed as belonging to the firm in the absence of any agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following items: all property, rights, and interest brought as contribution capital. All the property, rights, and interest acquired on or purchased by or for the firm or for the purposes and in the course of the business of the firm and goodwill of the business. अगला आता है गुडविल। गुडविल किसे बोलते हैं? गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस हाउस in respect of profit expected in future over and above the normal level of profits and by same scale of business. Goodwill of a business is subject to a contract between the partners to be regarded as property of the firm. Relation of partners to third parties. A partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. However,
One partner can make other partner liable to a third party only if he acts within the scope of his express or implied authority. बात करते हैं ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर की ऑथोरिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट्स। फर्स्ट, एक्सप्रेस अथॉरिटी। सेकंड, इम्प्लाइड ऑस्टेंसिबल अपरेंट अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी कौन सी होती है? जो गिवन बाय वर्ड्स होती है प्लस स्पोकन और रिटन होती है। इम्प्लाइड ऑस्टेंसिबल और अपरेंट अथॉरिटी कौन सी होती है? जो प्रोवाइडेड बाय द एक्ट होती है। जो एक्ट खुद प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं अपन इम्प्लाइड ऑस्टेंसिबल या अपरेंट अथॉरिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। है। फिर आता है अगला, इम्प्लाइड अथॉरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है। ए पार्टनर्स एक्ट शैल रिलेट टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है। एक्ट शैल बी डन इन द यूजुअल वे। ठीक है। एक्ट शैल बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म, सेलिंग फर्म्स गुड्स प्लस परचेजिंग गुड्स फॉर द फर्म प्लस एक्सेप्टिंग एनी पेमेंट ऑफ डेट ड्यू टू फर्म प्लस engaging and discharging employees. We have the authority of partners in a trading firm. Partners have the following additional power. First है borrow money on the firm's credit plus place firm's good for that purpose. ठीक है। Second है to accept, make and issue the negotiable instrument in the firm's name. To employ a solicitor or attorney on behalf of the firm. Partner's authority in emergency. Partner has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, acting under similar circumstances, and such act bind the firm. अगला, cases having no implied authority of partner submit a dispute related to the business of the firm in arbitration, opening of bank account on behalf of the firm in his name, compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm, acquire immovable property in the name of firm, transfer of immovable property belonging to the firm, enter into partnership on behalf of the firm, withdraw of a suit filed by the firm, admit any liability in a suit against the firm. Liability of an incoming partner. No person can be admitted as a partner into a firm without the consent of all existing partners. ठीक है? An incoming partner shall be liable for debts from date of the admission. An incoming partner is not liable for debt incurred before he joined the firm. Incoming partner may assume liability for past debts by agreement between creditor and existing partner of the firm. The other liability of an outgoing partner. A partner is set to retire when he ceases to be a member of the firm without dissolution. A partner may retire with the consent of all other partners according to agreement or by giving notice in writing to all other partners in writing partnership at will. May an outgoing partner is liable for debts contracted while he was a partner. Outgoing partner may discharge himself from any debt by agreement between creditors and existing partners of the firm. Effect of admission statement representation made by partner. An admission or representation made by a partner concerning the affairs of the firm is treated as statement made by firm and is binding on firm except where partner's authority is limited and other party knows the restriction. अगला है effect of notice to a partner who habitually act in the business of the firm operates as notice to the firm. ठीक है, except in the case of fraud on the firm. ठीक है, ठीक है. Notice to the partner of the firm who usually act in the business of the firm for any matters related to affairs of the firm operates as a notice to the firm except in case of fraud. Liability to third parties. Liability of a partner for act of the firm. सेक्शन 25 बोलता है every partner is liable jointly with all the other partners and also severely for all acts of the firm done while he is a partner. Liability of firm for wrongful act. One partner done in ordinary course and within authority firm will be liable. Liability of firm for misapplication by partner.
Partners receive money while acting in the authority or money come into the custody of the firm. Be supplied by partner, firm will be liable to third. Oh, right of transfer of partner's interest. A share in a partnership is transferable like any other property. Assignee of a partner's interest by sale, mortgage, or otherwise can't enjoy the same rights and privileges as the original partner. Transferee cannot interfere in conduct of business, cannot inspect accounts, plus only entitled to receive the share of the profits, cannot challenge the accounts. On dissolution or on retirement of the transferring partner, share of assets plus entitled to an account as from the date of dissolution. Minor as a partner. According to Indian Contract Act, an agreement by a minor is void ab initio as against him, but he can derive benefit under it. However, a minor can at most be admitted to the benefits of partnership with the consent of all the partners, not personally liable. राइट्स केस में इसके मायने के राइट्स के शेयर ऑफ द प्रॉफिट प्लस इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट ऑफ द फर्म sue the partner for account for or for payment of his share but only when severing his connection with the firm on attaining majority he may within 6 months from majority or attaining knowledge about partnership whichever is earlier elect to become a partner or not to become a partner. If elect to become a partner failed to give notice within 6 months, then he is entitled to the share to which he was entitled as a minor, personally liable from the date of admission. If he elect not to continue, then not liable for any act of the firm after the date of the public notice served to the that effect, entitled to sue partners for his share, the slight oblique liabilities as minor till date of notice. Minor cannot be declared insolvent, but if the firm is declared insolvent, his share in the firm vests in the official receiver oblique assignee. Expulsion of a partner. Expulsion is valid under following conditions, otherwise null and void. The power exists in a contract में लिखा होना चाहिए. The power exercised by a majority of partners and exercised in good faith. Test of good faith. The expulsion must be in the interest of partnership. The partner to be expelled is served with a notice. He is given an opportunity of being heard. उसको नोटिस देना पड़ेगा. देख, जैसे अगर आप किसी पार्टनर को निकालो ना उसके सीधी सी बात वो बोल रहे हैं कि आप पहले उस पार्टनर को एक नोटिस देना पड़ेगा उसकी बात सुननी पड़ेगी ठीक है और पार्टनरशिप का इंटरेस्ट में होना चाहिए. Insolvency of a partner cannot continue as a partner. He will be ceased to be a partner from the very date on which the order of adjudication is made. Is state of the insolvent partner not liable for the act of the firm done after the date of order of adjudication. The firm is also not liable for any act of the insolvent partner after the date of the order of adjudication. Generally, insolvency leads to dissolution of firm, but if partners are competent, they can continue. Death of a partner. Generally, insolvency leads to dissolution of firm, but if partners are competent, they can continue. Except where partnership consists two partners only. His estate is liable only for liabilities undertaken during his lifetime. No public notice required. Rights of outgoing partner to carry on competing business. Outgoing partner may carry and advertise competing business, but subject to contract. To the contrary, he may not use the firm name but represent himself as carrying on the business of the firm or solicit the person related to the firm. Outgoing partner may enter into agreement with his partners that he will not carry on any business similar with in a specific period or within specified local limits, but restrictions should be reasonable, otherwise invalid. Rights of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits. Section 37 बोल रहा है क्या? Member ceases to be a partner
Death, retirement, insolvency, etc. Plus firm is carried on without settlement of accounts, then in the absence of contract of the contrary, he or his legal representative can claim proportionate share of the profits, that is, to claim profit in the capital ratio or interest at the rate of 6% per annum, whichever is beneficial. Section 37. In the case of death of a partner, until the deceased partner's capital account is settled, the executor of the deceased partner is entitled to. So executor ने deceased partner का जो है किसके लेवल है 6% पर एनम इंटरेस्ट ले ले आया कि हमारा प्रॉफिट है कैपिटल रेशियो पार्टनर जो ज्यादा होएगा उसमें बांट के ये बोल रहा है और कुछ बोल ही नहीं रहा ठीक है भाई कोई बात नहीं फिर आता है कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू ए